Hello everyone. Welcome to IMS Get.Set.Law. And today, in our another session on Law School Insider, we'll be talking about one of the very famous national law universities, about Manohar Lohia National Law Institute or National Law University. And we have with us one of the famous alumni of the institution itself, that is Arpit. So before or rather than talking or getting into the institution's knowledge or getting to know about the institution, let's first try to know a little about you, Arpit. So where are you from, and what if you like, what about your studies and also if you can just tell us a little about that. So hi everyone, I'm Arpit Richaria. Basically, I'm from Vidisha, Madhya Pradesh. But I have never lived there. I have completed schooling from Indore, Kendriya Vidyalaya, Indore. Then I went to Dr. Ram Manohar Lohia National Law University, Lucknow for my BA LLB honors. Then after that, I did LLM from NLU Bhopal. And currently, I am working with Coal India Limited, that is the Maharatna PSU of Government of India. So yeah, that's all from my side. Yes, so that is very wonderful to know, and studying in the Nawabo ka sheher. So how is the life? I mean, see, there is this idea. You come from NLU Lucknow, I come from NLU Mumbai. So this idea that law schools make you a snob. You have this idea that law school that give you this idea कि law school ने तुमको बहुत ही rude बना दिया है. So how true is this idea? I mean, what is the life Uh, of RMNLU? Not really. So, but like actually, to an extent, it makes you a snob. Like when I was preparing for CLAT in back in 2016, so I prepared for CLAT in from Bhopal only, and the Okay. Sakshi ma'am who is now teaching in IMS, I would like to give whole credit to her only because she is one of the best teacher I have ever seen. So the thing was that when I was preparing for CLAT, so NLUs were something like dream for us. तो एट दैट टाइम मतलब ये था कि यार बस जाना है एनएलयू में जाना है कुछ भी करना है मतलब उसके लिए जो कोचिंग में भी जो एनवायरनमेंट रहता था वो यही रहता था कि जस्ट यू हैव टू गेट थ्रू इट एंड देन यू विल लिव लाइफ ऑफ एनएलयू फॉर 5 years. So somehow I got all India rank 660 and I get into Dr. Ram Manohar Lohia National Law University. But एक्चुअली मतलब शुरुआत में व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग तब आई वाज लाइक कि हाँ एनएलयू बट आफ्टर दैट इट इज लाइक ओके व्हेन यू गेट इनटू इट द लाइफ बिकम्स मोनोटोनस फॉर यू एंड you get above all these things. Correct. Absolutely. I mean, of course, initial hype hota hai, but then at the वो same वो time, the life of NLU is a little, that's what do you true say, better that's or true different. True. That's really I would say कि काफी ज्यादा अंतर आ जाता है मतलब क्योंकि आपके सराउंडिंग में जो स्टूडेंट्स रहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो बाकी यूनिवर्सिटीज रहती हैं वो इन जनरल यूनिवर्सिटी है वहां आप ही के साथ 15-20 और कोर्सेज चल रहे रहते हैं बट Correct. जब आप एनएलयू में जाते हो तो एनएलयू सोलली एक लॉ यूनिवर्सिटी है वहां आपका जो बी एलएलबी या जो कोर्स रहेगा वो उनका जो मेन कोर्स है वो रहेगा तो जो मेन एम्फेसिस रहता है वो सारे मतलब एवरीवन इज अबाउट टू टेक केयर ऑफ यू देयर मतलब हर चीज आपकी जो कोर्स है उसी के लिए बनाई गई है जो रिसोर्सेज हैं जो भी सब चीजें हैं सब आप ही के लिए बनाई गई है साथ में जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो भी मतलब आई वुड नॉट से कि क्रीमी लेयर बट स्टिल मतलब जब आप क्लैट एग्जाम से आते हैं उसको पास करके आते हैं तो इन जनरल जो एनवायरनमेंट रहता है वो काफी अच्छा रहता है और मतलब जो पीयर लर्निंग जो हम लोग बात करते हैं वो वहां पे बहुत मतलब टीचर्स तो आपको पढ़ाते हैं जैसे नॉर्मल ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज में टीचर्स जो रहते हैं वो मैं ये कह सकता हूँ कि हो सकता है शायद एनएलयू से बेटर रहते हो बट जो पीयर लर्निंग वाला जो फैक्टर है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि जब आपके साथ ही के लोग जो उसी एनवायरनमेंट से आ रहे हैं और थ्रू आउट द इंडिया से आते हैं तो मतलब वो डिफरेंट उनका कल्चर मतलब हम लोग बिहार के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे हम लोग पंजाबी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे हम लोग मतलब ऑल ओवर इंडिया के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे जो लोग आते थे जो हम लोगों के फ्रेंड सर्कल था वो पूरे सब मतलब आप सोच रहे हो ना कि डिफरेंट कल्चर्स
डिफरेंट उनके Absolutely. फैमिली बैकग्राउंड, वो सबसे आके जब आप और सीखते हो कि और मतलब जो बोलते हैं कि हर इंसान में कुछ अलग खास बात रहती है, उसका कुछ यूनिक फैक्टर रहता है जिसमें वो बेटर रहता है। तो हम लोग Correct. दूसरे लोगों में देखते थे कि कुछ लोग किसी चीज़ में अच्छे थे, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता था उससे। No, that is very true. I mean, the same thing ना, वासुदेव कुटुंब की जब हम बात करते हैं, one big family. So NLU does become one big family, but at the same time, sometimes डेफिनिटली। I feel, see, we have all learned this thing, कि freedom is never absolute in nature. So या my freedom should, and rather it always ends at your doorstep. My freedom ends at your, but this idea कि my freedom ends at your doorstep, and coming back to this same idea of one big family. So then don't you think sometimes वो classroom debate dining hall तक चला जाता है या room तक चला जाता है, that you know we have दैट्स this वेरी thing. रेयर केस, You, I mean, दैट्स वेरी रेयर more केस। about the institution. How is it like? What all do you have? What all additional activities do you have? How is So campus in general? if you are like asking me about the unique feature of NLU Lucknow, so I would say like it is the best NLU camp, like it has best NLU campus. मतलब जो NLU कैंपस में जो ड्रीम अगर आप किसी कैंपस का कर सकते हो और आप किसी NLU का कैंपस अगर मतलब पूछा जाए, अगर उनको कंपेयर किया जाए, क्योंकि जनरली जब हम लोग जाते हैं फर्स्ट ईयर में तो स्टूडेंट्स में काफी कंपैरेटिव फीलिंग्स रहती हैं, Yeah, तो वो yeah, yeah. दूसरे Very एनएलयू में true. जो उनके फ्रेंड्स जाते हैं उनसे कंपेयर करते हैं। तो इफ यू आर गोइंग टू आरएमएल देन यू विल हैव एन अपर एज अबाउट ऑन योर फ्रेंड, क्योंकि मतलब जो कैंपस है और दूसरी चीज लोकेशन, मतलब इट इज इन बिटवीन द सिटी, मतलब आप वहां से स्टेशन हर चीज बहुत पास में है, मतलब हर चीज Correct. बिल्कुल सिटी के सेंटर में बनाया गया है वो कॉलेज। और कैंपस की बात करें तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो मतलब इसके लिए आरएमएल फेमस भी है काफी। फिर ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल जो है हमारे यहाँ, Wow. वो किसी एनएलयू में नहीं है। उसके Okay. बाद स्क्वैश, अभी स्क्वैश एरिना हमारा इनॉग्रेट हुआ है, अराउंड 10 to 12 करोड़ में हमारा नया जिम बना है, मतलब इट विल मैच विद गोल्ड्स और समथिंग, मतलब बहुत अच्छा जिम बनाया गया है, बहुत अच्छा। इंफ्रास्ट्रक्चर के सेंस में आरएमएल से बेटर कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। Students are promoted in a manner, if we the kind of things you're saying, so extracurricular is also promoted apart from the एक्स्ट्रा regular करिकुलर इज curriculum. ऑल्सो प्रमोटेड डेफिनेटली। स्पोर्टिंग कल्चर, कल्चरल फेस्ट काफी ज्यादा, मतलब आपको अगर आप दिन भर में पढ़ के एग्जॉस्ट हो भी रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज और इवेंट्स चलते रहेंगे जिससे आपका माइंड बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएगा। That is actually ये very good. So CLAT aspirants, वेरी you गुड। should definitely हाँ, हाँ, think of all of these दैट्स things ट्रू। and know about it. मतलब फॉर क्रिकेट एंथुसियास्ट, मतलब वी आर हैविंग लोहिया प्रीमियर लीग, फॉर एवरी स्पोर्ट्स वी हैव इंट्रा एज वेल एज इंटर स्पोर्ट कंपटीशन। तो Okay. जैसे क्रिकेट में हमारा लोहिया प्रीमियर लीग होता है, तो वो जैसे एंड ऑल द टूर्नामेंट्स आर ऑन ऑक्शन बेसिस ओनली। तो Correct. प्लेयर्स जाते हैं, बिडिंग होती है, वो परचेज करते हैं, उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट में टीम ओनर्स रहते हैं, Wow. प्रॉपर वो जो It वो gives you a live, full IPL kind of feeling. IPL kind of feeling, definitely. Or it is not limited to cricket only. For badminton, football, so like we have cage football competition. Panenka, Okay. it is a cage football competition. ये भी बहुत unique sport है. ये मुझे नहीं लगता किसी और NLU में होता होगा. Like I can't say it with complete assurance, but मुझे जितना पता है कि हमारे यहाँ का unique feature है. मतलब केज फुटबॉल कंपटीशन बहुत, और इतना ज्यादा उस टाइम पे आप एनवायरनमेंट जो रहता है कॉलेज का, मतलब you will see around 400-500 people in just a area of what we can say 50 by 50 meters. Wow. That And is actually, all I are mean, cheering for the players. The environment is really like I am feeling nostalgia right now. that's good to know that sessions like these make you feel nostalgic and make you feel Definitely, go into the institution again. But going to yeah, the institution so again. I mean, Thomas Jefferson says this thing, that a lawyer without books would be like a workman without tools. So now talking Yeah, about books, tools, work and everything, we've observed this one thing that, NLU Lucknow or RMNLU for that matter has this idea that there are a lot of students who are lamp fellows, or we have seen students getting into judiciary, government sector or JAGs for that matter. So I mean,
should I put it like this, that is there any special form of training that is given to the children in that ambit or at that aspect altogether, or there's a specific culture that the students grow into right from the beginning? ओके, सो बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन मैं कुछ और पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि Sure. हमारे यहाँ जो लॉन टेनिस कोर्ट है वो भी सिंथेटिक लॉन टेनिस कोर्ट है। मुझे नहीं लगता किसी और एनएलयू में सिंथेटिक लॉन टेनिस कोर्ट है। Wow, 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 wow. That's तो I mean, very nice. इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आरएमएल इज बेस्ट। लोकेशन वाइज ऑल्सो मतलब मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूंगा, बट काफी एनएलयूज ऐसे हैं कि आपको वहां जाने के लिए कैब करनी, मतलब आपको कैब का इतना चार्ज लग जाता है, आपको 2 घंटे लग जाते हैं। और लखनऊ की कनेक्टिविटी अमेजिंग, मतलब आई कांट स्पीक अबाउट इट। Wonderful, वंडरफुल। wonderful. और मतलब और बात ये थी कि जैसे जो हमारा कॉलेज था, यू कैन रीच देयर बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑल्सो। इतनी इतनी अच्छी That's लोकेशन very, है। so that is what makes the call, the inclusivity of the college that we are trying to talk about, the inclusivity of that institution डेफिनेटली, is what makes डेफिनेटली, it little better, gives that upper hand. डेफिनेटली, Correct. डेफिनेटली। So coming ऑल्सो back द to the same कनेक्टिविटी भी आ idea. जाता है। Correct. या Yeah. so you were asking about lamp fellow and books, so also we have a Madhu Limai library. Okay. Our library is named upon Madhu Limai, so it is a complete digital library. So in this you can check sitting on in your room that whether such and such book is issued to someone or is it still in the shelf. Also you can go and submit it on a machine, like you can get your book issued and you can submit it on a machine. उस जो Okay. पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है। एक वेब ओपेक करके सॉफ्टवेयर है, उस पे आप देख सकते हो कि ये जो बुक आपको चाहिए वो किस शेल्फ में रखी हुई है, और अगर नहीं है तो वो इशूड मतलब है या नहीं है फर्स्टली, देन अगर है तो वो कहाँ रखी हुई है, आप वहां जाके उसको पिक करके उसको इशू करवा सकते हैं। Wow. Quite benefiting digitization. Very nice. I mean, Definitely, definitely. And also the we often get mails from our library कि आपको कोई सी बुक अगर रिक्वायर्ड हो तो आप उसका रिक्विजिशन दे सकते हो, तो वो उसको मतलब बहुत कम टाइम में परचेज करके और आपके लिए अवेलेबल करवा देते हैं। that's very मतलब good. फॉर इंस्टेंस अगर आप किसी मूड के लिए जा रहे हो और ऐसी कोई बुक है उस पर्टिकुलर, क्योंकि मूड्स जो रहते हैं जैसे सब अलग-अलग सब्जेक्ट्स पे रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ मीडिया लॉ का होता है, सब अलग-अलग सब्जेक्ट मैटर पे मूड्स रहते हैं या डिफरेंट Correct. कॉम्पिटिशन्स रहते हैं। तो आप किसी कॉम्पिटिशन में जा रहे हो और उसकी बुक, क्योंकि लॉ बुक्स काफ़ी महँगी आती हैं, मतलब मैंने Absolutely. देखी है कुछ-कुछ बुक अराउंड 1 लाख और अबव दैट भी उनकी प्राइसिंग्स रहती है। तो ऐसी प्राइसिंग की बुक आप खुद से अफोर्ड करके उसको नहीं पढ़ सकते। So university avails that for you also. Okay, I mean, that is very good to see that the institution themselves take that efforts. Now, Definitely. a complementing question or complementing, I mean, response to this would be, you mentioned about media laws moot court. So I have heard this Yeah. thing that RML becomes the only institution in the nation to hold an exclusive moot court with regards to media law. So I mean, that is again something unique. At the same time, what are these? I mean, does RML have this habit of holding multiple centers, और how is the culture in general? Student teacher connect कैसा है वहाँ पे? So first of all, answering your question about media law, तो मैंने भी सुना है कि it is the only university, but I can't say it with full confidence because मैं किसी और यूनिवर्सिटी से और मैं और कट ऑफ हो चुका हूँ after coming here, Correct, so मैं correct. उसके बारे में कोई मतलब स्टेटमेंट नहीं दे सकता। बट जो आपने उसके बाद क्या, what was the second question? Could you please So repeat second it? one, talking about the curriculum in general. Now we did Yeah, speak yeah, yeah. about the extracurricular. So how is the Committees and all. exactly. So we have like multiple 7 or 8 committees, like debate and discussion committee, moot court committee, internship and placement committee, and legal aid committee, sports committee, cultural committee. Apart from these committees, we have what we say societies, जैसे Correct. कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सोसाइटी, क्रिमिनल लॉ सोसाइटी। इनफैक्ट क्रिमिनल लॉ सोसाइटी हमारी जो जेल अथॉरिटीज हैं उत्तर प्रदेश की, उनके साथ मेमोरेंडम साइन कर रखा है हम लोगों ने। फिर लीगल एड क्लिनिक इज आल्सो देयर। So in legal aid clinic, we go and help the person who are in need of legal aid. We give it for free. हम लोग मतलब जेल विजिट्स होती रहती हैं, और भी हमारा Okay. लीगल एड क्लिनिक हमारे कॉलेज की जो मेन एंट्रेंस है उस पे लीगल एड क्लिनिक है।
अच्छा, सो आप वहां जाके और फ्री लीगल एडवाइस आप ले सकते हो। इनफैक्ट वो आपके लिए लॉयर भी करेंगे अगर आपको रिक्वायरमेंट है, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। तो correct. So we have, so the institution right from its beginning gives the child about training of paralegal volunteering, and at the same डेफिनेटली time, when I mean talking about all of these things, you make them understand the grassroots level importance of law, and how every society or every part of the society should be available access to justice. So this idea is डेफिनेटली very very promoting. So now, knowing so much about the institution, I to actually feel more than anybody else, I should visit RML. So talking about all of this, now we all know this डेफिनेटली आई एम फीलिंग for sure. I mean, I can see that the nostalgia is there, and you would now you feel like going to the institution again. या But yeah, so talking about this, या we say this thing that law is like, law is like a culture that you're supposed to follow in your life. It is no more like, ट्रू that is just there, you study it, but it's like a way of life. Uh, I like to explain it with an example. So when I joined here, so I am in a mining company basically. So Coal India Limited is a company which deals with mining of coal. So when I went to meet my area general manager first, when I was giving my joining, so he asked me कि ये law जो है ये private में भी होता है क्या? He is a 58, 59-year-old man and he was asking me ये law private और मतलब मेरे ऑफिस में ही around 4-5 और more than that मतलब 5-10 पीपल मुझसे पूछ चुके हैं कि ये लॉ प्राइवेट में भी होता है क्या, बट बार काउंसिल हैज प्रोहिबिटेड इट, सो लाइक दे कांट डू इट Correct. Correct. with their jobs. So this itself shows the importance of law. So Absolutely. and you were asking me to give some advice to the students. So the thing is that you should try your best to get into the law school, the national law school. But even if you are not getting it, then too the life is not like खत्म नहीं हो जाता सब कुछ. उसके बाद भी you can do whatever you want. Or Absolutely. I can remember you were asking something about LAMP fellowship and judiciary as well. Yes. Yes. There was some issue from my side. So जो ज्यूडिशियरी वगैरह का है, तो जब बैक इन 2017 व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर और सो अराउंड 100 or 150 people from NLU get through PCSJ, that is UP judiciary. मतलब Oh, although they were from 5-6 years, but still the numbers were huge. So the culture of absolutely. judiciary is enormous in our university. That is wonderful. So I mean, students, if you're planning to get enrolled into judiciary in your coming years of law, you must definitely think of getting into, or at least Getting visiting into an it. institution for sure. Definitely. And for LAMP fellowship also, like many of my friends are doing it right now also. Okay, So they, yeah. So for that also, like the culture there is, the culture in our university is for the कि आपको judiciary निकालना है, LAMP fellowship, मतलब इस सब के लिए if you want any help for that, तो आपको मदद करने के लिए जैसे आप ये यहाँ डिफरेंस आता है जो मैं बता रहा था कि आप correct. किसी ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी में रहोगे तो आपको पूछोगे बट मदद करने वाला वो एक हेल्पिंग हैंड नहीं रहेगा। I यहाँ आप am. पूछोगे तो 4 लोग आपको आके हेल्प करने तैयार रहेंगे और वो भी ओपन हार्टेडली। वो खुद आप जैसे आप किसी से पूछोगे तो वो बता देगा कि यार आई एम नॉट गुड इन इट बट आप इससे कांटेक्ट कर लो। आप वो बंदे को कांटेक्ट करोगे वो आपको इतने अच्छे से समझाएगा कि अगर आपका करने का मन नहीं भी होगा तो शायद आप फिर उसको कर लो। That is so good to see. I mean, this is what makes us feel inclusive in an environment. So डेफिनेटली that is डेफिनेटली that is wonderful to see this. So जो thank एनवायरनमेंट है you. वो तो डेफिनेटली काफी अच्छा रहता है और मैं अगेन जो भी स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स हैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आप कोशिश करिए। एनएलयू डेफिनेटली बेटर होते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी उनसे अच्छी रहती है या कुछ, बट एनएलयू डेफिनेटली बेटर रहती है। बट अगर आपका नहीं भी होता तो भी आप लॉ में बहुत बहुत अच्छा कर सकते हो। स्कोप मतलब लॉ का जो स्कोप है वो इतना इतना वाइड है कि आप एनएलयू Correct. तक लिमिट नहीं कर सकते उसको। आप अपनी प्रिपरेशन करिए, अपना बेस्ट दीजिए। अगर होता है तो ठीक, नहीं होता है तो भी आपकी लाइफ खत्म नहीं होती। आप उसके बाद भी बहुत-बहुत अच्छा कर सकते हो अपनी लाइफ में।
very that's all I want to say. very much required motivation, I would suggest. So thank you so much, Arpit. I mean, this was it was a wonderful session where, you know, in short, you Also get a to know nostalgia session for me. in short, you get to know so much about the institution. I mean, from an alumni who now feels so Definitely. nostalgic and, you know, now feels like going back to the Going institution, back to or the university. for that matter, to the speaker also. To me, I feel like visiting RML once. You So should this is definitely visit it once. correct. For I sure, would I suggest would. you to So, visit I it mean, once. to you all watching this video, the suggestion would be that, you know, these sessions make us get to know in depth in more about the institutions and how this is extra from the perspectives that they give us. So we will be keep coming with these sessions. We'll be talking more about different NLUs. We'll be talking more about different institutions and with regards to CLATs. So please stay tuned, and we'll see you soon. So thank you so much. Thank you so much, Arpit. Thank you so much to everybody for joining this session, and see you all in the next video. Bye bye. Thank you so much, Arpit. Bye.